Hello and welcome students. This is Kumar Saurabh, your critical reasoning faculty, and today I am present in front of you with critical reasoning practice sheet number 2. And without wasting any further time, we'll start with the passage first of all. We'll see the passage in brief, and after that we'll try to solve all the questions which are based on this. Okay, so the passage goes like this. There is no uniform answer to whether and when language of a rule will or should yield to the goal of reaching the best result in the particular case. सिंपल सी बात बताई जा रही है, लैंग्वेज ऑफ रूल के बारे में बताया जा रहा है, बेसिकली लॉज के बारे में बात हो रही है कि जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनका जो लैंग्वेज है, इसका कोई भी यूनिफॉर्म आंसर नहीं है इस टर्म्स में कि क्या उस लैंग्वेज से आपको प्रॉपर रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि डिजायर्ड है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा. नॉर डज द लॉ ऑलवेज गिव द सेम आंसर when there is a conflict between the outcome that would be produced by a rule's background justification and outcome indicated by the literal meaning of the rule's words. तो दो चीजें हैं यहाँ पे, दो points. The first is rules background justification and outcome indicated by the literal meaning of rule's words. दो चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है जब भी किसी लॉ या रूल के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो ये जरूरी, पहली चीज ये थी कि ये जरूरी नहीं है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको हमेशा मिले बेस्ड ऑन द लैंग्वेज. आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, वो ये कि इसका बैकग्राउंड जस्टिफिकेशन क्या है और साथ ही साथ उस रूल का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या कहता है. इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या दोनों में कॉन्सोनेंस है या नहीं. Although cases like United States versus Locke show that taking the words at face value, even at some sacrifice to reach the best result for the particular case, is common in American law. पहले पार्ट में, इस सेंटेंस के पहले पार्ट में बोला कि कोई भी पहले तो केस के बारे में बोला गया है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस लॉक, है ना, और फिर ये बताया गया कि इस केस के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग लॉ के लैंग्वेज को या रूल के लैंग्वेज को अगर उसके फेस वैल्यू पे ले तो हो सकता है कि किन्हीं सिचुएशन में आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, एंड इवन मोर कॉमन एल्सवेयर सो टू इज द ऑपोजिट रिजल्ट. Yes, it would be a mistake to ignore the numerous instances such as Locke in which what the words most literally say carries the day इन लीगल डिसीजन मेकिंग. तो इस केस के बेसिस पे ये आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि हाँ, अगर लॉ और रूल्स का जो लैंग्वेज है उसको अगर उसके फेस वैल्यू पे लिया जाए तो ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, एंड इन अ कंट्री लाइक यूएस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल दैट यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलना शुरू कर रहा है, बट इट इज जस्ट एज मच ऑफ अ मिस्टेक to ignore the descriptive importance in the United States and even elsewhere of the Church of Holy Trinity principle, which says that achieving a rule's purpose even at some sacrifice of literal meaning is the appropriate course of action. तो आपको अभी तक क्या क्या बातें पता चली? आपको ये पता चला कि अगर आपसे कोई एक यूनिफॉर्म आंसर बोले, यूनिफॉर्म आंसर आपसे अगर कोई मांगे कि क्या किसी लॉ या किसी रूल के लैंग्वेज को लिटरली लेना चाहिए, उस वही डिजायर्ड रिजल्ट देगा या नहीं, तो इसका कोई यूनिफॉर्म आंसर आपको शायद ना मिले. फिर केस के बारे में बताया गया, फिर उस केस के बेसिस पे ये बोला गया कि हाँ, फेस वैल्यू पे अगर आप चीजों को लोगे, खास करके लॉज और रूल्स को, तो शायद वो आपको फायदा पहुंचा सकता है, डिजायर्ड रिजल्ट आपको दे सकता है. बट अगर उसकी डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर कर दो तो शायद ये नुकसान भी दे सकता है. अभी तक इतना बताया गया है. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, लीगल आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रिफरिंग द लेटर टू द स्पिरिट ऑफ लॉ आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज फॉर्मलिस्टिक, एंड जुडिशियल डिसीजंस लाइक लॉक रूटीनली अट्रैक्ट चेंजेस ऑफ फॉर्मलिज्म. सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट अभी तक फॉर्मलिज्म के सेंस में बताया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मलिज्म को दिमाग में लेके चलोगे तो बाकी चीजें शायद बैकग्राउंड में चली जाएंगी, एंड दोज बाकी चीजें आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. रूल्स और लॉज से आपको चाहिए क्या होता है? जस्टिस की एक्सपेक्टेशन होती है, डिजायर होता है,
तो शायद वो चीजें बैकग्राउंड में चली जाएंगी. Yet although it is true that nowadays to call a judge or opinion or decision formalistic is rarely a compliment, it is not entirely clear what it is to be a formalistic or just what is wrong with it. ठीक है, criticism दे दिया गया, but साथ ही साथ एक और point बताया गया कि हाँ, on one hand what you do is you try to criticize laws and rules based on the criteria of formalism, but at the same time if I ask you what exactly is wrong with the concept of formalism, then you might not be able to give me the answer. ये बताएगा. Under this view, judges are being formalistic when they believe that they are operating in the core of a legal rule, when in reality they are at the fringe. ये बोल के end कर दिया गया है इस passage को. Okay, so based on this, let's try to solve some question. The first one is, which of the following examples is worthy of criticism on account of it being too formalistic? See, we'll have to see the options first. A, the outcome of a case based solely on the literal meaning of the word liberty. ये relevant है. अगर liberty ये जो एक ऐसा word है, इस वर्ड के आप लिटरल मीनिंग पे जाओगे और सारी चीज़ों को उसके लिटरल सेंस में आप अगर ट्रीट करने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट एम है जस्टिस का वो अधूरा रह जाएगा. देन बी, टेकिंग इनटू जजमेंट नॉट ओनली द लिटरल मीनिंग बट द स्कोप टू विच इट कुड बी एक्सटेंडेड. नहीं, तो ये तो क्रिटिसिज्म का पॉइंट नहीं हो पाएगा. ये तो अच्छी बात है कि आप सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे, आप सिर्फ लैंग्वेज पे नहीं जा रहे, बट आप ये भी देख रहे हो कि इसके स्कोप को कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं. तो दैट इज अ गुड थिंग. सो वी विल नॉट बी एबल टू क्रिटिसाइज दिस पॉइंट. सी, टेकिंग जस्ट द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड इक्वालिटी एंड गिविंग द डिसीजन फॉर इक्वल पे विदाउट कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन. कहीं ना कहीं ए और सी दोनों ही सिमिलर है. सो वील से दैट डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी. Moving on to the next question. Mark the correct inference. Here the right answer is going to be C, which says depending on the time and circumstances, there is a possibility language may provide us with the best result in a case. देखो, यही तो inference है ना. ये बात इस inference के लिए हमारे पास evidences है पैसेज में. ये हम लोग कह सकते हैं कि टाइम और सर्कमस्टांस अगर सही है तो ऑफ कोर्स ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान में रख के हम लोग जस्टिस बेहतर तरीके से दे पाएंगे. सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अमेरिकन लॉ. ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द पैसेज. हियर द राइट आंसर इज not going to be any of the options A, B or C. The right answer is going to be D. It's a very easy question, so I'm not going to waste more time on it. Let's move on to the next question, which says which of the following implications about American law are incorrect. Which of the following implication about American law are incorrect? Here the right answer is going to be D, which is all of the above. A says the approach of literal meaning is more dominant in American law. ठीक है, ये incorrect है. The approach of literal meaning is more dominant in American law, of course. B, the spirit of law assails triumphant over the literal meaning of law in American courts, of course. And C, American courts are more formalistic than other nations. So all of these are not correct. Then which of the following would strengthen the author's contention? Strengthen the author's contention. The right answer here is going to be D, which says being formalistic means when the judge thinks he is interpreting the core of law when in fact he is in the doldrum regarding clarity. Self-explanatory hai. If you have understood the passage, you'll be easily able to pick this answer choice as the right one. So on this note, I would like to conclude. I hope you guys understood everything that I tried to discuss. We'll see you next time. Keep watching Clad Gurukul and all the videos that we upload every day. Thank you so much.